जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं के एस राजन्ना जी से, जो सुदूर कर्नाटक से आए हैं और इन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत सारा काम किया है, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जब इनकी मुलाकात राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी से हो रही थी, तो उन्होंने खास तौर से इनका नाम लेकर इन्हें पुकारा। बड़ा ही खुशी का वो लम्हा था और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने इनका नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को एक एक डिटेल से याद थी, इनका नाम, इनका कार्य क्षेत्र और सब कुछ। कैसा लगा सर जब प्रधानमंत्री जी ने आपको नाम लेकर पुकारा और जब आपको सम्मानित किया गया? ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು। ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ मोदी जी की बहुत ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ है। ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ಕಾಯರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ। ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಲರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ, ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ। जी, तो मनु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं के सनिल लॉ हैं और ये बतौर ट्रांसलेटर हमें अनुवाद करके बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा है राजन्ना जी ने। मनु जी ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनके क्या वो अद्भुत पल थे जब इन्होंने सम्मान ग्रहण किया? मोदी जी ने हमारा का नाम लिया है, वो उसको बहुत खुश हो गया। बाद में भी हमको भी आके बोल रहा था, मेरा नाम लिया, मेरा मन में क्या था उसको बोल दिया है एटलीस्ट, और अच्छा से रेस्पॉन्ड किया। उसका स्पर्श इतना अच्छा है, हमको जोश आ गया। और उसको क्या मेरा नाम बोला था ना, राजन्ना जी कैसे है, even he can identify the awardee names because many awardees will be there, even he is identifying his name and he is calling and he is it was a goosebumps moments for him. And even the persons who were watching directly or indirectly. दिव्यांग होते हुए आपने इतना सोशल कार्य किया है, समाज कार्य किया है, कभी ऐसा लगा कि दिव्यांगता मेरे लिए एक कर्ज है, अभिशाप है? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು। ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಮಗನಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ನೋವನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುವಂಥ ಕಷ್ಟ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಬೇಕು, ಈ ಮಗುನ ನಾನು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। ಈಗ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ। ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಆ ಮಗುನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ। ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ, ಇದು ನನಗೆ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವರ ಇದು। जी मनु जी, उसका पिताजी कब उसको ऐसा हो गया 6 मंथ्स का चाइल्डहुड में, उसको पिताजी बोल रहा था क्या इतना एज में ऐसा हो गया मेरा बेटा को, अभी क्या करना, वो उसको दुख था। बट वो वही टाइम पे है, उसको मेरा बेटा को ऐसा ही नहीं छोड़ना, उसको देश का एक वैल्यूएबल सोर्स करना है, उसका देश का एक प्रमुख व्यक्ति बनाना, और उसको ऐसा है तो भी परवाह नहीं, हमको ये बच्चे को हम अच्छे से ट्रीट करता है और अच्छा उसको एजुकेशन भी दे दिया, उसको एजुकेशन को
एडमिशन नहीं लिया, उसको स्कूल को जाने को एडमिशन नहीं दिया। एडमिशन नहीं दिया तो भी उसको उसका पिताजी ने उसको बोल के पूरा कैसे लिखना कैसे पढ़ना वो पूरा समझ गया। उसको अभी भी इसका पहला गुरु उसका पिताजी है, उसका पिताजी का आशीर्वाद है, इसलिए हम उसको कभी भी ऐसा दुख नहीं है, मैं ऐसा है ऐसा दुख नहीं है। जी हाँ, तो दिव्यांगता को अभिशाप नहीं मानने वाले और लगातार अपने जोश जुनून और जज्बे से इन्होंने एक नई इबारत लिखी है, नई कहानी लिखी है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र जी से, जो हम सब के लिए प्रेरक हैं। और खुशी का मौका तब होता है जब ये बिना किसी मदद से राष्ट्रपति भवन में जाते हैं और खुद चलकर जाते हैं और वहाँ सम्मान ग्रहण करते हैं। अपने जुनून से और अपनी सहनशक्ति से और अपनी चेतना से ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र सर, आपने कुछ मांगे रखी हैं सरकार को लेकर, दिव्यांगों को लेकर सरकार से कुछ मांगे रखी हैं आपने, क्या कुछ आवाज़ है जो आप वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने और दिव्यांगों के लिए कुछ किया जाए? क्या कुछ है, कुछ कहें आप। ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳು ಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದನೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೇತಾಜಿ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಲೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. वो दिव्यांग को डेवलप करने के लिए अभी सभी क्षेत्र का मेरे को हमको सपोर्ट चाहिए। अभी सभी सपोर्ट मिलेगा तो हम भी उसका ऊपर जा सकता है। और दिव्यांग क्षेत्र में वो सिर्फ दिव्यांग क्षेत्र का नहीं है, और दूसरे डिप्राइव्ड सोसाइटी, सभी सोसाइटी या सभी कम्युनिटी को भी मैं एक ही तरफ देखना है। और दिव्यांग नॉन दिव्यांग नहीं, हम भी दिव्यांग है तो भी उसको अच्छे से ट्रीट करके हम ऊपर लेना है। हमारे साथ इनकी डॉटर जुड़ रही है विनोलिया, और ये कितनी खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि विनोलिया आज आईटी सेक्टर में बहुत ही सुपर सक्सेस ले रही है, काम कर रही है, और राजेंद्र जी ने इन्हें वेल एजुकेट किया है और आज यहाँ तक पहुँचा है। विनोलिया जी, क्या कहेंगी आप पिताजी के बारे में, कुछ कहेंगे? Were you expecting that father will do such a great thing? Yeah, of course. So since from when I was in childhood, what I've seen in my dad and the thing what is inspired is, if you think of anything, nothing is impossible. So if my father takes one thing until he makes that possible thing, he won't leave that. And we are really great, proud of my father, and we really truly humble for the Prime Minister Narendra Modi ji for identifying such talents, and we're grateful from me and my family, and for everybody we're grateful for the PM as well as for the President. So, can you tell me one thing, like, were you expecting, this was totally unexpected thing that he's going to receive this Padma Award. So now, do you think that the expectation of the people has become now increased after getting and receiving this award? Definitely, the confidence in the people of Divyangs would have been definitely raised by looking at my father. And I can tell that my father is a good example of being for Divyangs, and for all other, even for non-Divyangs also, he's a good inspiration. And it would have become more confident in them, and more self-confident would have been increased, of course. And it's an inspiration, and it's a great moment for all of us. We're continually talking with Vino. Vino is like daughter of Rajeendra sir. Rajeendra sir, do you have any expectations from your kids, your child, or anything else you want to convey for the youngsters? Any message you want to give, the message to the Indian of country? Young sister, young people, ಯಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆದರ್ಶತೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಏಮ್ ಏನಿದೆ, ಗುರಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧದಲ್ಲೂ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೇಶ, ನಾವು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆತನ. All the youngsters, what he's telling is, you shouldn't lose the self-confidence. So if you face a failure once, it doesn't mean you have to leave that. So until you get a succeed, you have to try it, and only when we try, we will find the success at one point of time. And whatever work he's taken, he won't think that personally is impossible.
And if he take a work, he takes in the motivation only, or in the motive only, that in his hand it is possible, and he thinks that he challenges to himself, I can do it. It's neither me or that one. So when he thinks that, it is always being a success for him. That's great. तो कौन कहता है कि जुनून और जोश से हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं? राजेंद्र सर इसके सबसे जीवन प्रमाण है कि अगर हमारे भीतर आशा का संचार हो, अगर हम पूरी उम्मीद के साथ अपने काम में लगे रहें, दिल से लगे रहें, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। राजेंद्र जी से हम लगातार बात कर रहे हैं। विनी, एक लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न, कि एक बेटी के तौर पे जब किसी पिता को एक बहुत बड़ा देश का सर्वोच्च सम्मान हासिल होता है, तो बेटी की क्या वैल्यू फीलिंग्स होती है उस वक्त? कैसा महसूस कर रही थी जब आपके पिता अपने कदमों से चलकर जा रहे थे और सम्मान प्राप्त कर रहे थे, और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति वहां खड़ी थी? कैसा लग रहा था? पूरा देश आपको देख रहा था, आपके पिताजी को देख रहा था, तो एक बेटी होने के नाते आपकी क्या फीलिंग रही उस वक्त? It's really a proud moment, and we are so lucky to experience this in person, and we really proud of this, and we're very happy, and we are very fortunate to have this experience in our life, and it's a dream of everyone who could have. And once we enter the Rashtrapati Bhavan, and it was a goosebump moment, as I said, and we are very fortunate for having this experience in our life. थैंक यू विनो, एंड थैंक यू सर। आप देश के लिए बहुत बड़े प्रेरक हैं, और देश के वो तमाम वैसे हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, विनो को सुन रहे हैं, लगातार उन तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि अपनी हिम्मत ना खोए और हिम्मत ना हारे, और अगर केवल और केवल साहस की ताकत आपके पास है तो आप सारी जंग जीत सकते हैं। इसी के साथ हम किसी और एपिसोड में मिलते हैं किसी और पद्मश्री के साथ। तब तक दें हमें विदा। नमस्कार।